Okay, so dear students, today we will discuss introduction about bearings in angular measurement. It is subject offered by GTU in first and second sem in basic civil engineering subject. Okay, so we'll proceed. First of all, we have to understand what is bearings. Okay, so you can see here I have written the definition of bearings. The bearing of line is the horizontal angle which it makes with a reference line, which is also called meridian. Fixed reference line, which is called meridian. So bearing of line is nothing but horizontal angle which it makes with a reference line. It is called bearings. Depending upon the meridian, there are four types of bearing. First one is true bearing. What is true bearing? The true bearing of a line is the horizontal angle between the true meridian and the survey line. Okay, true bearing is measured from the true north in the clockwise direction. You can see the figure. Okay, so this is our figure. You can see this is our true north, that is our meridian here. And you can see this is the angle which it makes. Survey line, this is your survey line AB. This survey line AB makes the angle with the true north, means true meridian. Okay, which is called true bearing. So what is that? It is the horizontal angle. Your compass always measure the horizontal angle. So it measure the horizontal angle. So you can see here your survey line makes the angle with the true north. That bearing is called true bearing. Same way you can see here magnetic bearing. The magnetic bearing of a line, it is the horizontal angle with the line makes with the magnetic north. You can see the figure. This is your second one. This is your magnetic north, means our meridian. In our case, it is meridian, magnetic meridian. You can see here I have written. And this is your angle, which your survey line AB makes with the magnetic north. You can see. So it is called magnetic bearing. So you have to only remember this common parameter, that is horizontal angle, because your compass survey always measure the horizontal angle. Third one is grid bearing. The grid bearing of a line is the horizontal angle which the line makes with the, instead of magnetic north, true north, grid meridian. Okay. Then arbitrary bearing. The arbitrary bearing of a line is the horizontal angle again which the line makes with the arbitrary meridian, is called arbitrary bearing. So very simple definition. Then we proceed further. Next definition is whole circle bearing. Okay, so what is that? The bearing of line measured from the north is called whole circle bearing. In whole circle bearing, what we are generally doing, we always measure the angle with respect to north direction. Okay, I will show you figure also. The angle is reckoned in the clockwise direction from 0° coincide with the north. Okay, and second one after that, quadrant bearing, which is also called reduced bearing also. So whole circle is divided into four quadrants. As the name suggests, quadrant means we are dividing into four parts. Okay, four quadrant. The bearing is expressed with north or south as prefix and east or west as suffix. And quadrant bearing is also known as the reduced bearing. Okay, you can also use this quadrant bearing, or another name is reduced bearing. So you can see here, this is the figure of whole circle bearing system. So as I told you earlier, you can see here, this is your OA line. This is OA line is your survey line. This OB, what is your OB? It is your survey line. OC is your survey line. OD is your survey line. Okay, and your OA survey line makes the angle theta 1, you can see, with respect to north direction. Okay, then you can see here your OB line, which is in the second quadrant, it makes the angle theta 2, you can see, but again with respect to north direction. Then you can see OC line, it again makes the angle theta 3, you can see this, but again with respect to north direction. And this is your survey line OD, this again make the angle theta 4 with respect to north direction. Means
all the angle we are taking with respect to north direction in whole circle bearing system. That is the very important you have to remember. Okay. Bearing of line measured with respect to magnetic meridian in clockwise direction is called magnetic bearing, and its value varies between 0 to 360 degree. Circle bearing always gives the reading from 0 to 360 degree. Okay. The quadrants start from north and progress in clockwise direction, as the first quadrant is 0 to 90 degree in clockwise direction, second one is 90 to 180 degree, third one 180 to 270 degree, and up to 360 degree is the fourth one. Okay. So this is very simple one. As I saw already shown in the figure, same thing is written here, so I am not repeating this part. Now next one is coordinatal bearing system. So what is that? In this system, the bearing of survey line are measured with respect to north line or south line, whichever is nearest to the given survey line, either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Okay, so you can see here, this is the quadrantal bearing system figure. I have divided my whole circle bearing into 4 quadrant. Okay, so this is my first quadrant, northeast. You can see this is my second quadrant, southeast. Then third quadrant, southwest, and fourth quadrant, northwest. Here, whenever we will measure the angle, that angle we will measure either with respect to north pole or south pole. Okay. In previous case, what we have done in whole circle bearing system, whenever we measure the angle, we always measure with respect to north direction only. But here you have to see your survey line is in which quadrant. For example, you can see your OA line is here. It lies in the first quadrant. This OA line approaching which pole? You can see here, north pole. Okay. So we will measure angle with respect to north direction. Then in second quadrant, you can say this is your OB line is lies in the second quadrant. Okay. And it is approaching which pole? So you can see nearer pole is south pole. So we will measure the angle with respect to south. You can see I have mentioned here arrow mark also by this way. In previous one, you can say this way. Then your OC line is lies in the third quadrant. Whichever pole is nearer to this OC line, you can see south pole. So we will always measure the angle with respect to south direction. You can see I have shown the angle arrow. Sorry, I have shown the arrow. And OD line, you can see this is OD line, OD survey line. Here, whichever pole is nearer to that north pole. So we will measure the angle here with respect to north direction. You can see the arrow. So in quadrantal bearing system, we follow the north pole or south pole. Okay, whichever nearer to the survey line. Accordingly, we have to move. Hello. Okay. So, okay, what we will do? If you have any doubt, you just note down any. Hello. Just. Hello, just you note down your doubt. If you have any problem, we will discuss after the end of the session. I will give the chance, okay? I will just at a time give the chance, okay? So right now, just you unmute your microphone. So right now, just you unmute your microphone. Okay, mute कर दो उसको. Okay. So reduced bearing, as I told you, when the whole circle bearing of line is converted into quadrantal bearing, it is termed as the reduced bearing. And thus the reduced bearing is similar to the quadrantal bearing, and its value lies between 0 to 90 degree, but quadrant should be mentioned for proper. Okay. So now come to this particular table. Okay, my voice is somewhat. Just all participants are requested that you just mute your microphone, so you can easily hear my voice. Just mute your microphone. At the end of the session, when we ask this question, okay, at the time you can open your microphone. Means you can on your microphone. Okay, so come to this table. So this table is very important to solve some example also, to understand the phenomena also. So this table shows the rule of conversion for WCB to RB.
means whole circle bearing system is given to you and you have to convert into RB. So you can see here WCB line is given 0 to 90 degree and your quadrant is first, quadrant is northeast. So what is the rule of conversion? RB is equal to WCB. Okay. Then if your WCB lies 90 to 180 degree, means it is in second quadrant southeast. What is the rule of conversion? RB is equal to 180 minus WCB. I will show you the figure also, diagram also. So no need to remember this table also. Okay, I will give the tips. So no need to remember this table also. You can using the drawing also you can remember this all the formulas. Okay. Then third one, if your WCB lies in third quadrant 180 to 270, what is the rule of conversion? RB is equal to WCB minus 180. And if your WCB lies in the fourth quadrant 270 to 360, what is the rule of conversion? RB is equal to 360 minus WCB. So this is very simple one. When WCB is given and you have to convert into RB. Suppose vice versa case, if RB is given and you have to calculate WCB, what you have to do? You have to just change this formula. In the first case, it will be remain same. WCB is equal to RB. In the second case, WCB is equal to 180 minus RB. So like that you can do vice versa case also. We will solve some example also so you can get some idea. Okay. The next definition is forebearing and back bearing. Every line has two bearing, namely forebearing and back bearing. And forebearing is the bearing taken in the direction of surveying and back bearing is bearing taken in the reverse direction. So now what is the meaning of that? Actually, students, when we perform the practical in the field and we take some station, suppose A station is there. So for every station we have to take two reading. One is the forebearing, another is back bearing. Forebearing means it is the bearing taken in the direction of survey, means forward direction of survey, means suppose A to B, then B to C. So this is your direction of survey. So if you take the bearing in the forward direction of survey, it is called forebearing. And suppose if you take the bearing in the reverse direction, means backward direction of survey, it is called back bearing. Suppose you are right now sitting at A point. So what is your backward direction? Suppose A, B, C, D your station. So what is your backward direction? A to D. Okay, then D to C, like that. In anti-clockwise you can say. So this is very simple one, forebearing and back bearing. And very important thing is that the difference between the forebearing and back bearing should be 180 degree. That is very important that you have to remember. Because when you take forebearing, back bearing for any particular line, and if you check the difference, and that difference somewhat suppose 181 or 182 or 175 like that, then you have to automatically judge that something problem is there in my reading. Okay, you can see. Now see the figure. I have put here one figure. You can see this is your AB line. Okay, and this arrow shows my direction of survey. So this theta1 angle which it makes with respect to north direction, it is called forebearing. Whereas this theta2 is my called back bearing because it is in reverse direction of survey. Same way you can see here. This is my theta1. This is my direction of survey. This is my direction of survey. So my theta1 is called forebearing here and theta2 is called back bearing line AB. Okay, so this is very simple. You have to just take the angle, but if you take in the forward direction, it is called forebearing. If you take in backward direction, it is called back bearing. Okay. Now here, very important phenomena that you have to remember. As you know, there are two types of system, WCB system and RB system. So in WCB system, if difference between the forebearing back bearing should be exactly 180 degree, then you have to remember this thing. Back bearing is equal to forebearing plus or minus 180. This formula actually required when back bearing is not given to you. Suppose in exam also, line is given to you, forebearing is given to you, but back bearing is not given to you, and it is in WCB system, then you have to remember this formula. This is very important to calculate the back bearing using this particular formula. So back bearing is forebearing plus or minus 180, but when we have to use plus and minus sign,
here it is a given, plus sign is applied when forebearing is less than 180 degree. Okay, for example, suppose your forebearing is 170, suppose it is given, then back bearing is forebearing plus, you have to use your plus sign. And suppose your forebearing is somewhat greater than 180, suppose 200. Okay, so at that time you have to take here minus sign. So this is all about for WCB system. What about quadrantal bearing system? Here in quadrantal bearing system, reduced bearing system, forebearing and back bearing are numerically equal, but quadrant are just opposite. So what is the meaning of that? Suppose here I have taken the example, forebearing of AB is given north 60 degree east, so its back bearing is south 60 degree west. Means you can see here 60 degree. Value are numerically equal, but quadrant are exactly opposite. Northeast, it is his first quadrant, so exactly 180 degree. If you count, what will be your quadrant? It will be third quadrant, southwest. Okay, so it is written reduced bearing system, the forebearing back bearing are numerically equal, but quadrant are exactly just opposite. By this way you can easily calculate the back bearing. So we will take the example also, so you can understand easily. So you can see I have taken one example, very simple example. Calculate the back bearing of following line if back forebearing are given. So you can take, you can see here I have taken three example. AB is equal to 265 degree, PQ is equal to 160 degree, and MN is equal to 350 degree. So suppose for this line I have to calculate back bearing. So you can see here my back forebearing value is greater than 180, and you can see the our formula here written. If it is greater than 180, we have to take minus sign. So what I have done, back bearing of line B is equal to forebearing of line AB, which is given 265, minus here I will take minus sign because it is greater than 180. So 265 degree minus 180 degree, you will get your answer, that is 85 degree. Same way you can say for MN 350 degree bearing is given. Calculate back bearing, what we have to do? To write this way, back bearing of line MN is equal to forebearing of line MN, which is given 350, and again this value is greater than 180, so you have to just deduct 180, you will get your answer 170. Then you can say this example, here 160 degree is given, here forebearing is less than 180 degree, so here you have to take plus sign. So back bearing line PQ is nothing but equal to forebearing line PQ plus 180. You just add the value, you will get your answer. Okay, so this is very simple example. Now we will take some more example here. Okay, here I have given WCB value and I have to find QB as per our table. I have already shown you table, so same way. But as I told you, you don't need to remember the table even. If you remember this figure diagram, you can easily calculate that thing. Okay, so you can see how. So here 130 degree WCB is given. Okay, you just understand clearly. Here you can say WCB value is given 130. What is the meaning of that? It is lies in the which quadrant? Second quadrant. So I have written here line PB lies in the second quadrant. Okay. Now we have to calculate QB. So what is the rule of conversion for QB? I will just show you that table also and then come to the figure also. Okay, you can see RB is equal to 180 minus WCB. This is the rule of conversion if your line lies in the second quadrant. Okay, so come to that our figure. Yeah. Okay, here. So you can see 180 minus WCB. Okay, so from here to here value is 180. You can see north to south. Okay, and this angle is from here to here is 110, 130. You can see my cursor. You can see my cursor. This 130. Okay, from PB line up to PB line, and from north to south, what will be the value? 180. So if you deduct 130 from 180, what will your answer? 50. But that angle is, you can see here your PB line approaches which quadrant? Approaching the south pole. So you have to always measure the angle with respect to south pole, means your answer will be south 50 degree east. Now you can see there is you can you think that we have to remember that table? No need to remember that table. You just calculate using this diagram also. 180 minus WCB, it is written RB is equal to 180 minus WC. Here you can see from the figure you can judge, you can take judgment. 180, 130. Okay, what is the difference? 50. But you have to write this value, so you have to write this way: south 50 degree east.
You can see this first example. Here I have given WCB value 35 degree 15 minute. Okay, which lies in the quadrant, first quadrant. I have written line PA lies in the first quadrant. What is the rule of conversion? RB is equal to WCB. So you have to simple write this value. PA is equal to not 35 degree 15 minutes. In QB system you have to mention the quadrant also. In WCB system there is no need to mention the quadrant. Okay, but in QB system you have to mention the quadrant. So you can see your line lies in the which quadrant? Northeast. So you have to always write this way: north 35 degree 15 minute east. And more important thing that your PA line approaches which pole? North pole. You have to always see that your line approaching which pole. So here it is approaching the north pole. So you have to write this way: north 35 degree 15 minute east. Okay, this is the first one, this is the second one we have seen. Then third example. Here you can see your value of WCB is 210 degree 15 minute, which lie in the third quadrant. So I have written here line PC lies in the third quadrant. Okay, now what is the rule of conversion? RB is equal to WCB minus 180. Okay, so I will same thing I will do with the help of figure. So you can see up to this line 210 degree 15 minute. Okay, and up to this point what will be your 180. Okay, here some mistake is there, so don't okay, here some my mistake is there. This angle will be from here to here, not from here to here to here, because this is 210 degree 15 minute and from north to south it is 180. So if you deduct 180 from 210 degree 15 minute, what is the angle? This angle. And this line approaching which pole? South pole. So how will you write? South 30 degree 15 minute west. Okay, this will become here. So here some small mistake is there, so don't consider this. Your angle will be from here to here and it is approaching south pole. So south 30 degree 15 minute west. And now we will take fourth example. Here 290 degree 45 minute WCB is given. Okay, means from here to here. Always with respect to north direction. In WCB, always we measure the angle with respect to north direction. Don't forget. So this 290 degree 45 minute is from the north direction. So what is the rule of conversion? You can see this total is 360 degree. So 360 minus WCB. So this will be 360, and from here to here your 290 degree 45 minute, you will get this angle. Now this PD line approaching which pole? North pole. Okay, so always you have to write with respect to north pole. So north 69 degree 15 minute, you can see here west. So this is a very simple one. By this way you can easily calculate QB value if WCB is given. Same procedure you can do for the vice versa case if QB is given and you have to convert WCB. I will show you the example. You can see here. Here you have to calculate gold circle bearing from QB. So for the first case, north 15 degree east, what will be the rule? RB is equal to WCB or WCB is equal to RB. So you have to just draw this way your diagram and you have to just show your PA line is 15 degree. So your answer is WCB is 15 degree. And you don't have to mention the quadrant. Okay. Second example. South 25 degree 45 minute east, PB line. Your PB line is this. South 25 degree 45 minute east means your angle is from here to here. You can see my arrow, and total is north to south is 180. So you have to deduct this value 25 degree 45 minute from 180. You will easily get your answer 154 degree 15 minute. You can see here I have written also 180 minus 25 degree 45 minute. Okay, it's a very simple one. Then third case, south 45 degree 30 minute west. Okay, so here southwest means it will be lies in the third quadrant. Means this angle is from here to here. You can see south 45 degree 30 minute west is from here to here, and from north to south it is 180. So 180 plus this angle means total will be from here to here, that will be 225 degree 30 minute. Okay, then fourth one, north 10 degree west means this quadrant. Your angle will be from here to here. You can see my cursor. This will be your 10 degree. Total is 360.
So from 360 you just deduct this 10 degree, so you will get your 350 value. So what is my point? You don't have to remember the table also. If you remember this diagram even, okay, formula will be automatically remembered to you. So we have seen two example. When WCB is given, you have to calculate RB or QB, and when QB is given, how to calculate WCB. Same way this example is for forebearing and backbearing. So here you can see line PQ is given. I have given forebearing value, and I was told you that two formula also. When WCB is given, how to calculate backbearing, and when QB system is given, how to calculate backbearing. So this is, you can say, example of WCB system. And you can see this value of forebearing is less than 180 degree. So what you have to do to calculate back bearing of line PQ? You have to add this value in 180. Okay, I will just annotate at that particular, so you can easily. Okay. Okay. uh, Annotate, pencil tool, pen tool. Okay, so this is, you can see. Okay, thank you very much, because I am also doing this first time. Okay, so sorry, you can't see that thing. Okay, so this is 38.15 degree. Okay, good. You do very simply add this. Okay, now next, this is the second example. You can see. So here you can see, uh, yeah, 210 degree 15 minute is given, which is forebearing is given, which is greater than 180. So to calculate back bearing of this line PQ, what we have to do? We have to minus 180. So 210 degree 15 minus 180, you will get 30 degree 50 minute your back bearing. Okay, we have already seen that three example. Okay, the same thing is written here, but with the help of diagram also. Now next, computation of angle. So now we will see one example. Okay, and then we'll proceed further. In GTU you have to calculate example, and that example is in which you have to calculate include angle. Include angle means the angle which is formed inside the traverse. You can see this is the example of one traverse. So actually our aim is to calculate this angle, include angle which makes inside the traverse. That is our ultimate aim. Okay, so you can see one example I have taken here. Line is given, forebearing is given, backbearing is given. Line you can see here AB, BC, CD, DE and EA. Okay, and back bearing you can see, back bearing is given 115 degree 150 degree 15 minute, 20 degree 30 minute, 295 degree 45 minute, 218 degree 0 minute, 120 degree 30 minute. Same way back bearing is given 330 degree 15 minute, 200 degree 30 minute, 115 degree 45 minute, 80 degree 0 minute and 300 degree 30 minute. What you have to do? You have to calculate the interior angle of the traverse. Okay, include angle. So we will proceed. So first of all, what you have to do? You have to draw the traverse, which is very important. And to draw the traverse, what you have to do? You have to take these four bearing readings. Okay, either you take all the four bearing readings or either you take all the back bearing readings. In both the way you can draw the traverse. So what I will do here, I will use four bearing readings, all the four bearing readings to draw the traverse. Okay, so you can see what you have to do. First of all, you have to take one point. You can see here I have taken one point, my A point. Okay, then you have to draw this way. This line means you have to mention that this is my north direction, this is my south direction, east west. No need to write down other symbol, only write down the north, so you can easily understand this which direction is there. And then you have to mention 150 degree 15 minute, like this way. You can see you have to mention the angle, and then you have to draw one line. Okay, so how much length of this line? Here no value is given.
means distance is not given from A to B. If it is given, then you have to measure, you have to draw actual with h per the scale. But here it is not given, so we will draw roughly up to this particular length. Okay. What is this value 150 degree 15? It is my 4 bearing reading for line AB. Now I am here. Again, you have to draw this way to mention your north direction. Then you have to take 4 bearing of line BC. Okay. As I told you, I have to take all the 4 bearing line only. So my 4 bearing line BC is 20 degree 30 minute. It lies in which quadrant? You can see first quadrant. So 20 degree 30 minute means this much, and then you have to draw this line up to this point. Whenever you draw this traverse, as I told you, no need to draw as per the scale, but you have to draw in a such a way that it looks like 20 degree 30 minute. If you draw somewhat this way, then your traverse will not in a complete shape. Okay. So you have to draw not as per the scale, but it looks like that you have drawn as per the scale. That is my point. So now you are here. As I already told you, distance is not given. Suppose if distance is given, suppose BC is given 50 meter, and if you take the scale 1 centimeter is 5 meter, then you have to draw this line as per this scale. But in exam, there is no need. This distance is not will given to you, so you have to just draw roughly. आपको अंदाजा लेना है, रफली ड्रॉ करना है, पर रफली को भी ऐसा ड्रॉ करना है कि वो एक्चुअल जैसा लगे. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फ्रॉम सी पॉइंट अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस. हर जगह हर स्टेशन पर आपको इस तरह से ये ड्रॉ करना है और नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन करना है. Okay, so from north direction you have to take 4 bearing of line BC. This is 295 degree 45 minute, means it will be in third quadrant. तो आप देखो यहाँ पर ये 270 है, तो 270 के बाद 295 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ आएगा पास. अगर आप ये ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपका एंगल बनेगा ही नहीं, आपका ट्रावर्स बनेगा ही नहीं. तो रफली ड्रॉ करना है पर एग्जैक्ट लगना चाहिए. तो फ्रॉम C to D you have to draw one line. Now you are here. Now from D to E, 4 bearing of line D is given 218 degree. So again you have to draw this way. north direction mention करो आप और फिर एक लाइन ड्रॉ करो. 218 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ये आपका 180 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, आप पहुंच गए E पॉइंट पे. ओके, नाउ फ्रॉम E पॉइंट again you have to mention north direction. What is the value of 4 bearing of line EA? 120 degree 30 minute. वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. तो यहां से ऐसा लाइन ड्रॉ करके फिर से करो और ये आपका लाइन ऑटोमेटिकली ए पॉइंट के साथ मैच हो जाना चाहिए. ये बात है. क्लोज टावर्स की अगर हम बात करें तो आपका ये यहां पर मैच हो जाना चाहिए. व्हाट इज ट्रावर्स? इट इज सीरीज ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स. वी आर राइट नाउ टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोज ट्रावर्स. तो आपका ई के साथ ये ए वाला लाइन मैच हो जाना चाहिए. अगर आपने एग्जैक्टली नहीं बनाया है पर थोड़ा मतलब इसमें एक्यूरेसी चाहिए. अगर आप एफएजली ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट यहां पर मिलेगा ही नहीं आपको. तो अभी हमने क्या किया है? What we have done, students, we have draw the traverse. Okay, using the all the 4 bearing reading. Same exercise, 4 bearing. Same exercise you can do with the help of back bearing. आपको उल्टा जाना है, आप उस तरह से भी कर सकते हो, आप ट्राई करना, हो जाएगा उससे. पर जो आपको बेटर लगे वही करने का. 4 bearing ही पकड़ो तो अच्छा है, तो क्या गलती नहीं होगी. So first of all you have to draw this traverse. I think you understand how to draw this tower. Very simple. You have to just take the angles. You have to just draw the quadrant system. Then you have to just mention the north direction for each and every station, and then you have to just take the angles and you have to just connect all the lines on a rough scale. It is not required that you have to draw with a scale. पर थोड़ा एक्यूरेसी रख के लेना है. कोई भी एंगल आप जैसे 20 डिग्री 30 मिनट आप एकदम यहाँ से ड्रॉ करोगे तो फिर वो नहीं बनेगा. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल्स. आप देख सकते हो 5 लाइन है, मतलब 5 एंगल आएंगे. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई. सो व्हाट वी हैव टू डू? कम टू द ए पॉइंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर ईच स्टेशन देयर आर 2 रीडिंग्स रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर राइट नाउ एट ए पॉइंट. सो वन रीडिंग इज रिक्वायर्ड 4 bearing of line AB in forward direction, and another reading is required back bearing of line EA in backward direction. हर स्टेशन पर आपको 2 रीडिंग लेना है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में. मान लो आप बी स्टेशन पर हो तो आपका एक रीडिंग कौन सा आएगा? 4 बेरिंग मतलब B to C, और बैक बेरिंग क्या आएगा? B to A, लाइक दैट. तो आपको सिंपल क्या करना है? डिफरेंस लेना है.
और ऐसा कोई रूल नहीं है कि फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग घटाना है या बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग घटाना है, जो बड़ा उसमें से उसको घटा दो। तो मैंने यहाँ लिखा है डोंट राइट नाउ रिमेंबर दिस वर्ड एक्सटीरियर, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटीरियर वर्ड कैसे आया। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बुक में नहीं बताई होती है, सिंपल लिख दिया होता है और हमको फिर पता नहीं चलता है कि यार ये एक्सटीरियर इंटीरियर कैसे है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हमको क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। मैंने बताया ए पॉइंट पर अगर खड़े हो आप तो बैक बेरिंग आएगा आपका ये, और आगे का कौन सा आएगा, फोर बेरिंग ए बी। तो मैंने बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग घटाया क्योंकि ये बड़ा है वैल्यू, इसमें इसमें से इसको घटा दिया, मेरा वैल्यू आएगा 150 डिग्री 50 मिनट। अब ये मेरा एंगल आया एक्सटीरियर, ये कैसे पता चला, तो उसके लिए हमको फिगर देखना है। तो मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूं। तो हम ए पॉइंट पे थे, ठीक है, तो ए पॉइंट पर कौन सा वैल्यू था, ये हमको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो 300 डिग्री 30 मिनट एंड 150 डिग्री 50 मिनट। ओके, तो आप देखो ये आपका ए पॉइंट हो गया। हाँ, अब ये जो लाइन ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट पर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों बताऊंगा। लाइन ये है तो उसका बैक बेरिंग क्या होगा, 330 डिग्री 30 मिनट, मतलब ये आप मेरा एरो देखो यहां से यहां तक, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये लाइन है। सो 300 डिग्री 30 मिनट मतलब यहां से यहां तक। और फोर बेरिंग लाइन ए बी, ये आपकी ए बी लाइन है, उसकी फोर बेरिंग मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आपका यहां से। तो 300 डिग्री 30 मिनट जो आपका है उसमें से 150 डिग्री 15 मिनट अगर आप घटाते हो, आपका एंगल कहां बन रहा है, यू कैन सी इट इज आउटसाइड द ट्रावर्स, क्योंकि आपका ट्रावर्स तो ऐसे जा रहा है ना, तो ये आपका एंगल आउटसाइड द ट्रावर्स बन रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है, अंदर का एंगल, तो उसको क्या करना होगा मुझे, व्हाट आई टू डू, I have to deduct from 360. You can see. So interior angle A is equal to 360 degree minus 150 degree 15 मिनट। आप ये निकालो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये मीनिंग है एक्सटीरियर इंटीरियर का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपका एंगल बी भी एक्सटीरियर बन रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया, एक आपको फोर बेरिंग रीडिंग चाहिए, एक आपको बैक बेरिंग रीडिंग चाहिए। तो स्टेशन बी के लिए फोर बेरिंग क्या होगा, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, और बैक बेरिंग क्या होगा, बैक बेरिंग लाइन ए बी। Here back bearing line is AB greater than four bearing line BC, so I am deducting this way 330 degree 15 minus 20 degree 30 मिनट। तो ये आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है एक्सटीरियर, तो ये कैसे बना, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम पीछे की तरफ जाते हैं और मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूं। तो 300 ये आपकी लाइन ए बी है, उसका बैक बेरिंग कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। आप देखो मेरा एरो 300 डिग्री 30 मिनट जो आपका है यहां से यहां तक, और ये आपका 20 डिग्री 30 मतलब यहां से यहां तक। तो आप ये जो आपका 330 मिनट जो दिया है उसमें से इतना आप घटा दो 20-30 मिनट, आपका एंगल कहां बन रहा है, ये देखो आप ट्रावर्स के अंदर ट्रावर्स के बाहर बन रहा है, मींस योर एंगल इज एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल पाने के लिए हमको क्या करना है, 360 में से आप ये बाहर का एंगल घटा दो तो आपको अंदर का एंगल मिल जाएगा। ओके, सो वेरी सिंपल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर। तो देखो 360 माइनस 30945 डिग्री, योर आंसर इज 50 डिग्री 50 मिनट। यू कैन गेट योर इंटीरियर। सेम वे फॉर एंगल सी, फोर बेरिंग एंगल सी के लिए क्या रीडिंग चाहिए, एक चाहिए फोर बेरिंग ऑफ CD इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक चाहिए बैक बेरिंग इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन, वो आपका क्या होगा BC। ऐसा याद रखने के, जैसे सी पे खड़े हो तो C to D और C से B, B पे खड़े हो तो आप A to B। ओके, इस तरह से लाइक दैट। सो अब आप देखिए, तो 295 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 200 डिग्री 30 मिनट, 95 degree 50 minute, but here it is written that your angle is interior one. How? See the figure, पीछे का फिगर हम देख लेते हैं। So we will just go to back, you can see here, ये आपका 295 डिग्री 45 मिनट्स है। ओके, और आपका बैक बेरिंग भी दिया है यहां से यहां तक। तो आपका एंगल कहां बन रहा है, ये देखो आप, आई विल शो यू द थ्रू एनोटेट। ओके, ये देखो, ये आपका 295 डिग्री 45 मिनट है, और ये एंगल आपको यहां से यहां एक दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका एंगल कहां बन रहा है, inside the traverse, inside the traverse, that's why you can see
That's why you can see here it is written that internal angle C, 295 degree 45 minute minus 200 degree 30 minute. Your answer is this. Same way you can calculate angle D. Angle D के लिए क्या चाहिए? Forward bearing of D in forward direction and back bearing of CD. Here forward bearing D is greater than back bearing CD. You just take the difference and you will get your answer. Now here you can see again angle is inside the traverse. आप इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो. I will show you through annotate. 218 degree from here to here and 115 degree 45 जो भी आपका आंसर है यहां तक सर्वे लाइन हमको देखना है. तो आप इसमें से इतना आप घटा दो, आपका एंगल कितना मिलेगा? ये एंगल मिलेगा which is again form inside the traverse. So your angle is D is interior. Okay. And same way you have to calculate for angle E. Forward bearing of EA minus back bearing of D, you will calculate your answer. Once you calculate all the answer, you have to do the check. And the formula is given 2n minus 4 into 90 degree. N is indicate the number of side, number of side. You can take number of side or number of lines or angles. कोई भी word आप use कर सकते हो. So your N is here 5. So if you put N is 5 and if you solve this, you will get 540. But suppose N is 4, चार ही एंगल दिया है, चार ही साइड दिया है, तो उस केस में आपका यहाँ पर N is equal to 4 रखोगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 360. तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्या करना है हम लोगों को? What we have to do? We have to check whether I am getting all the angle summation 540 or not. If I not getting, then something mistake is there. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं सभी एंगल का समेशन कर लूंगा. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी, और पांचों पांच एंगल का समेशन कर दूंगा. मेरा आंसर यहाँ पर 540 आ रहा है, मतलब कि मेरा एग्जाम्पल करेक्ट है. ओके, एग्जाम्पल इज करेक्ट. अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कुछ मिस्टेक की है. So if you solve some example, you will definitely get the idea. अभी सेम एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, पर मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, 15 मिनट से बचे हुए हैं. सेम एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में क्या होगा? आपको मान लो बैक बेरिंग मैं आपको नहीं देता हूं, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं किस किस टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल में तो आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग दोनों दिया हुआ है. Suppose it is not given to you, so what you have to do? First of all, you have to calculate the back bearing using the four bearing. और फिर आपका इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा. तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लाइन और फोर बेरिंग ही देंगे, बैक बेरिंग नहीं देंगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैक बेरिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैंने जो फॉर्मूला बताया उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है. फिर आप यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पेज दिख रहा है वहां पर आप पहुंच जाओ. तो उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रावर्स ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको समझाया. ट्रावर्स ड्रॉ करने के बाद आपको एंगल्स निकालने हैं, जहां इंटीरियर हो जहां एक्सटीरियर हो आपको कैलकुलेट करना है, समेशन करना है. समेशन करने के बाद आपका आंसर कुछ 541 आ रहा है. ये 541 आ रहा है. अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि 540 आना चाहिए. ये दूसरा टाइप का एग्जांपल है जिसमें ऐसा हुआ कि आपका सब कुछ आपने सही किया तो भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ समथिंग 541 आ रहा है. मतलब ये कौन से टाइप का एग्जांपल है? करेक्शन टाइप का, एरर टाइप का एग्जांपल, जिसमें कुछ एरर आती है. क्योंकि एरर जब आएगी ना तो ये नजदीक में आएगी. जैसे 540 तो 541 आएगी या 539 आएगी. 1-2 डिग्री की ही एरर होगी. अगर आपका 5-6 डिग्री का एरर आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 5 to 6 डिग्री एरर, देन तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि आपके एग्जांपल में कुछ गलती है. ये एक 0.5 और 1 डिग्री का एरर होता है. तो अगर इस तरह का एरर वाला एग्जांपल आया तो आपको क्या करना है? व्हाट यू टू डू? यू टू सिंपली डू दिस कैलकुलेशन. यू कैन सी सम ऑफ द एंगल 540 आना चाहिए, पर आपका आ रहा है 541. मतलब आपका एरर कितना है? व्हाट इज योर एरर? 1 डिग्री एरर. यू कैन सी 541 minus 540, यू आर गेटिंग 1 डिग्री प्लस एरर. तो हमको तो क्या है? 540 करना है, तो हमको 1 डिग्री एरर कम करनी है. तो टोटल करेक्शन कितना होगा? -1 डिग्री. 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? -60 मिनट. कितने एंगल्स हैं? 5 एंगल. तो आपको इसको डिवाइड करना है 5 से, मतलब कि आपका आंसर आया 12 मिनट. ये मिनट है. मतलब कि अगर आपको 540 लाना है तो आपको पांचों 5 एंगल में -12 मिनट का करेक्शन करना पड़ेगा. आपको इसके लिए क्या करना है? इस तरह से एंगल्स लिखने हैं, कैलकुलेट वैल्यू आपने जो कैलकुलेट किया और करेक्शन सभी में आपको माइनस कर देना है. तो आप फिर उसके बाद जो आपकी करेक्टेड वैल्यू आई और उसको करेक्शन करोगे, सॉरी समेशन करोगे, तो आपको 540 आपका आंसर मिल जाएगा. ये एग्जाम्पल पहले जैसे ही एग्जाम्पल है. फर्क इतना है कि आपका 540 नहीं आ रहा है, आपका कुछ एरर आ रहा है, 541 आ रहा है. कोई बार क्या होगा कि 539 आए 540 की जगह. आपको क्या करना पड़ेगा? -1 का एरर आया तो आपको +1 करना पड़ेगा.
और उसमें फिर डिवाइड बाय 5 है। पर ये बात है कि जब अगर 4 एंगल दिया हो तो क्या करना पड़ेगा, 60/4 करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो सामान्य सी बात है, आप इजीली जजमेंट ले सकते हो। ये मैंने आपको दूसरे टाइप का एग्जांपल बताया जिसमें एरर आ सकती है। पहला वाला सिंपल था जिसमें एरर नहीं होती, 540 आ जाना चाहिए, 360 हो तो 360 आ जाना चाहिए। दूसरे में अगर नहीं आता है, एरर आती तो क्या करना है, ये आपका है। ठीक है, फिर एक और होता है, ये जो भी दो एग्जांपल हमने देखे वो WCB सिस्टम के हैं। अगर आपको कॉर्डन सिस्टम में एग्जांपल दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। तो आप देखो इस तरह से मैंने लाइन फोर बेरिंग बैक बेरिंग दिया हुआ है, वैल्यू मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम कम है। और आपको इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम में रीडिंग दिया हुआ है, नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड बैक बेरिंग इज साउथ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। यू कैन सी इसमें भी ऐसा हो सकता है, आपको बैक बेरिंग ना दिया हो, केवल लाइन और फोर बेरिंग दिया हो और बैक बेरिंग ना दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा उस फॉर्मूला याद रखना है। क्या बोला है, वैल्यू आर न्यूमेरिकली इक्वल बट क्वाड्रेंट आर जस्ट ऑपोजिट। मतलब नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखा हुआ है, वैल्यू आर न्यूमेरिकल इक्वल, यू कैन सी वैल्यू आर न्यूमेरिकल इक्वल, तो ये तो आपको एज इट इज लिख देना है। और नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्टली 180 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। सो साउथ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, लाइक दैट यू टू रिमेंबर। आप दूसरा ले लो, इसमें भी देखो आप 60 क्वाड्रेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट 180, साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट, ये आप देख लो। ठीक है, वैल्यू आर न्यूमेरिकल इक्वल बट साउथ वेस्ट की जगह क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में बैक बेरिंग नहीं दिया है, फोर बेरिंग और लाइन ही दिया है, तो आपको इस तरह से बैक बेरिंग कैलकुलेट कर देना है। क्वाड्रेंट आर जस्ट ऑपोजिट एंड वैल्यू आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब आपको वही प्रोसीजर करनी है, पहले आपको ट्रावर्स ड्रॉ कर लेना है, तो ट्रावर्स ड्रॉ करने मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूं। पर आपको जैसे पता है कि एक हमारा जो नियम है, ये देखो 45 डिग्री 30 मिनट है, तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री 30 मिनट होगा। ओके, तो गुजराती में जैसे मैंने आपको बताया युग्म कोण जो बोलते हैं, सेम वे अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, ये वाला। अगर ये आपका 10 डिग्री 30 मिनट है तो ये वाला एंगल भी आपका 10 डिग्री 30 मिनट होगा। ये अगर आपका 75 डिग्री 45 मिनट है तो ये भी आपका 75 डिग्री 45 मिनट होगा। ओके, अंडरस्टूड। मैं आपको थोड़ा हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा क्लियरली थोड़ा ख्याल आए। सो नाउ व्हाट यू टू डू, यू टू रिमेंबर दी फिगर। ओके, ये थोड़ा आपको मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ। हाँ, ये अगर 45 डिग्री 30 मिनट है तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री 30 मिनट होगा। ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ये अगर 10 डिग्री 30 मिनट है तो ये भी आपका 10 डिग्री 30 मिनट होगा। ये अगर आपका 75 डिग्री 45 मिनट है तो ये भी आपका 75 डिग्री 45 मिनट होगा, एज पर दी मैथमेटिक रूल। ओके, अब मुझे मान लो, अब मैंने आपको क्या बताया वो कुछ याद नहीं रखना है कि किसमें से किसको घटाना है, क्या घटाना है, आपको ऑलवेज आपका डायग्राम याद रखना है एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप यहाँ देखो, मैं आपको यही बता देता हूँ, आपको फिर डायरेक्टली फिर पीछे वाले पेज पर ले जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ का एंगल ए निकालना, एंगल ए मतलब ये एंगल विच इज इनसाइड द ट्रावर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये 45 डिग्री 30 मिनट और ये आपका 75 डिग्री 45 आप घटा दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, तो आपका एंगल ए आ गया। सेम वे सी के लिए भी वही होगा, 10 डिग्री 30 मिनट और ये आपका 60 डिग्री है, उसको टोटल 180 में से आप घटा दो, तो ये आपका घट गया, ये आपका घट गया, तो आपको क्या अंदर का एंगल मिल गया। सेम वे हियर आप देखो 60 डिग्री दिया है और ये कितना है आपका 45 डिग्री 30 मिनट, तो इन दोनों का आप समेशन कर दो, एंगल भी मिल गया। सेम वे इधर 75 डिग्री 45 मिनट और ये एंगल कितना है आपका 10 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों का समेशन कर दो, एंगल डी मिल गया। तो आप बोलोगे यहाँ तो सर आपने किसी में से किसी को कुछ घटाया ही नहीं, घटाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली व्हाट वी टू डू, वी टू अंडरस्टैंड द फिगर बेस्ड ऑन द डायग्राम, वी टू डू द कैलकुलेशन। कहने का मतलब ये है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई वो कैलकुलेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी प्लस बैक बेरिंग डी, जो दो एंगल है हमने जो कैलकुलेट किया वो उसको 180 मिनट आप घटा दो, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 45 मिनट। सेम चीज आप सी में भी देखो उसी तरह से किया हुआ है। बी में देखो आप बैक बेरिंग ऑफ ए बी प्लस वो दो एंगल जो मैंने आपको बताया 60 डिग्री 40 उसका समेशन कर दो, सेम चीज यहाँ पर आएगी। आपके एंगल्स यहाँ पर कितने हैं, चार हैं, सो यू टू टेक n इज इक्वल टू 4, तो आपका समेशन आना चाहिए 360। आप चारों चारों एंगल का समेशन करके देख लो आपका 360 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है मतलब आपका एग्जांपल ओके है, ये आपका पहला टाइप का हुआ। अगर नहीं आ रहा है 361 आ रहा है मतलब ये कौन सा एग्जांपल है, एरर वाला एग्जांपल है। तो एरर वाला एग्जांपल मैंने WCB सिस्टम में कैसे करते हो आपको बताया। अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो कौन सा सिस्टम वाला है, क्वाड्रेंटल बेरिंग वाला है। ओके,
तो इस तरह से, और अगर भाई बैक बेरिंग नहीं दिया हो तो कैसे करोगे? तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको जनरली एग्जाम में WCB सिस्टम, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम और बैक बेरिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो सेम वीडियो आई हैव अपलोडेड इन GTU वेबसाइट, GTU lectures.gtu.ac.in। वहां पर ये दोनों, ये वाला भी एक वीडियो है, लेवलिंग का भी एक वीडियो मैंने रखा है। Actually, I am trying my level best, and this time today whatever we have tried, that is just for demo purpose, whether this thing is going or okay or not। थोड़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आई होंगी शायद वो एनोटेट करने में, वो थोड़ा बैक नहीं जा रहा था, पर ट्राई किया हुआ है। तो भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट माई ईमेल ID, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। KB Patel 99,999, 5 बार 9 लिखना है, KB Patel 99999@gmail.com। आप उस पर भी आपके क्वेरी जो हो डाल सकते हो। आपके लिए ये लेक्चर अरेंज करने का पर्पज ये था क्योंकि आपका अभी मिड सेम एग्जाम भी नहीं हुआ था, और ये सब चैप्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि कवर्स नहीं हुए आपके क्लास में। सो आई थिंक दैट मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में इसी तरह से फिर लेक्चर ऑर्गेनाइज हो वेबिनार थ्रू, तो आप भी इस तरह से थोड़ा हैबिचुएट हो सकें। और एक और रिक्वेस्ट मेरी ये थी कि हम फ्राइडे को एक और लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डॉक्टर कृपेश चौहान SUNIT सूरत के प्रोफेसर हैं, वो कोविड-19 जो भी फैला हुआ है उस पर हेल्थ रिलेटेड एक वेबिनार देने वाले हैं 22 तारीख को 6 से 7। वो मैं आपको इनवाइट कर दूंगा, मेरे पास है वो, तो जैसे मैंने इसके लिए इनवाइट किया था उसी तरह मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट यू जस्ट अटेंड दैट लेक्चर वेबिनार, तो आपको और अच्छा पता चलेगा। नाउ वी विल ओपन द सेशन। हमारे पास हार्डली 7-8 मिनट है, तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पूछने के लिए बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्रोफोन को तब ऑन करिए जब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और जब आपका क्वेश्चन पूरा हो तो आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो, तो क्या आवाज का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। So if you have any query, you can ask. Okay, so many students have joined. I am seeing right now participant list. So I am actually very thankful to you कि आप लोग इतने ज्यादा तादाद में ज्वाइन करने हुए। Okay, any question? Yeah. क्वेश्चन पूछने के लिए आपके साइड में माइक्रोफोन दिया हुआ है, माइक्रोफोन को आपको ऑन करना है। अगर अनम्यूट में, अरे सॉरी म्यूट में है तो उसको अनम्यूट कर दो आप, और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Okay, we have keep this session open. Anyone have doubt, you can ask the question. सर ये जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल वाला फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का था ना, हाँ हाँ, वो थोड़ा समझ नहीं आया। एंगल जो फाइंड कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, वो किस हाँ। हिसाब से फाइंड कर रहे हैं हम लोग? ओके, आपका नाम क्या है? दीपक। हाँ, तो दीपक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हम लोग पहुंच जाते हैं वो पोर्शन पे। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल है। ये हम देख लेते हैं, पहला एंगल देख लेते हैं, एंगल ए। यहाँ पर क्या लिखा है? बैक बेरिंग ऑफ EA माइनस फोर बेरिंग AB। इफ यू सी द डायग्राम, यू कैन सी द डायग्राम। आई विल, ओके, 300 डिग्री, 150 डिग्री, 50 मिनट। ओके, सो आप यहाँ पर देखो, मैं एनोटेट कर रहा हूँ। तो ये आपका 300 डिग्री 30 मिनट, मतलब ये आप अब मेरा एरो देख सकते हो दीपक। ये मेरा 300 डिग्री 30 मिनट यहां से यहां तक है। ये लाइन आपकी ये लाइन है, उसकी बैक बेरिंग होगी 300 डिग्री 30 मिनट, मतलब यहां से यहां तक। और ओके। फोर बेरिंग ऑफ लाइन दी है आपको AB 150 डिग्री 50 मिनट अप टू दिस पॉइंट। तो क्या होगा, 300 डिग्री 30 मिनट में से आपको 150 डिग्री 50 मिनट घटा होगा, तो ये एंगल आपका कहां बन रहा है? ट्रावर्स के बाहर बन रहा है। देखो ये आपकी ट्रावर्स EA वाली है, और ये ट्रावर्स आपकी AB लाइन और ये जो एंगल जो बन रहा है आउटसाइड द ट्रावर्स बन रहा है, इसलिए वहां पर लिखा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। और ओके। हमारा एम क्या है? हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, इंक्लूड एंगल निकालना है।
वो निकालने हाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्या होता है 360 होता है, उसमें से आप बाहर का एंगल घटा दो तो आपको अंदर का एंगल मिल जाएगा। तो ये जो ओके। एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो जजमेंट है ना, आपको डायग्राम से देख के करना है। और यही चीज जैसे कि आप जैसे आप बुक में से पढ़ रहे हो तो बुक में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है। एक्सटीरियर इंटीरियर का मतलब ये होता है, आपको ये देखना है बैक बेरिंग और फोर बेरिंग को मिला के ये जो डिफरेंस बनता है, जो भी एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इनसाइड द ट्रावर्स बन रहा है या आउटसाइड द ट्रावर्स बन रहा है। अगर इनसाइड द ट्रावर्स बन रहा है तो इंक्लूडेड एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये देखो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आया, फिर इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या किया, 360 में से घटा दिया, तो आपको ये मिल गया। जबकि सी के केस में आप देखो फोर बेरिंग ऑफ सीडी और बैक बेरिंग ऑफ बीसी है, 295 और 200 है। तो आप देखो मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। 295, ये देखो 295 डिग्री 45 मिनट है, ये दिखा आपको। और आपका 200 डिग्री 30 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो बीसी लाइन है, और ये आपकी वो लाइन है, ठीक है। तो आप 295 डिग्री 45 मिनट में से 200 डिग्री 30 मिनट आप घटा दो, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ये देखो आप इनसाइड द ट्रावर्स बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। हाँ, ये फर्क है। ओके ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? ओके, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं ले सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, हमने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो आप मुझे अपने डाउट जो भी हो आप भेज सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर लेवलिंग, कंपास सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट, आप देख लो बीसी के सब्जेक्ट में ये 3-4 चैप्टर में ही एग्जाम्पल है, बाकी पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। सो इफ यू वांट टू स्कोर यू टू एक मतलब आपको इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए, कहने का मतलब ये है इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप इसमें 28-30 मार्क के एग्जाम्पल आ गए और आपने थियरी कर दी, आउट ऑफ 70 मार्क्स में से थियरी आपने कर दी अच्छी, तो आप आसानी से 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक 11:58 हो गया है, और ये वेबएक्स मीटिंग हमको 1 घंटे तक का ये अलाउ करता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया नहीं है, 1 ही घंटे शायद करता है। जूम एप्लीकेशन केवल 40 ही मिनट करता है, इसलिए हमने ये वेबएक्स मीटिंग लिया हुआ है। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो, मैंने आपको ईमेल आईडी ऑलरेडी लिखवा दिया है। मेरे 2 ईमेल आईडी हैं, एक केबी पटेल 5x9 वाला भी है और केबी पटेल 4x9, जिसमें आप गूगल क्लासरूम में हो, आप दोनों पे ईमेल कर सकते हो। सो वी आर जस्ट एंडिंग अवर मीटिंग। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच। और हम फिर से ऐसा होगा तो फ्यूचर में ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एसी पटेल सर, थैंक यू जय सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।